लंच से पहले 2 नॉट आउट बैट्समैन थे, वो मैदान में उतर चुके हैं। आमिर यामीन 29 पर हैं, अली शान उनके साथ मौजूद होंगे 7 के स्कोर पर। सेंट्रल पंजाब ने गलती की थी इनिंग्स ना डिक्लेयर करने की सिंध के खिलाफ आखिरी दिन, जिसकी वजह से उनको 11 पॉइंट से महरूम होना पड़ा। और अभी वक्फे के बाद बॉलिंग की इब्तिदा की है आकिफ जावेद ने। अपना 33वां ओवर वो शुरू कर रहे हैं। अब तक 2 शिकार कर चुके हैं और इससे बेहतर की तवक्को की जा रही थी। यासिर? जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह की आपने बात की 321 की लीड हो चुकी है इस वक्त सेंट्रल पंजाब की, और मेरे ख्याल से ऊंचा खेले लेकिन सेफ, वहाँ पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था। मेरे ख्याल से थोड़ा सा तेज़ खेलने का इनको मैसेज होगा या कोई बात हुई होगी अभी, क्योंकि इन्होंने भी शॉट अटैम्प्ट की। आमिर यामीन जो कि लंच से पहले भी अच्छा खेल रहे थे, अपनी शॉट्स खेल रहे थे। अली शान ने अभी इनको ज्वाइन किया थोड़ी देर पहले, वक्फे से कुछ देर पहले। 35 बॉलें खेल चुके हैं 8 रन के लिए अपने। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो बलोचिस्तान के बॉलर्स हैं, ये देखिए गलती होगी, ओवरथ्रो का रन हासिल कर लिया अली शान ने, कि सुबह के सेशन में बलोचिस्तान के बॉलर्स ने पंजाब के बैट्समैनों को हद में रखा हो, बल्कि ये खुद उन्होंने शटर डाउन किया हुआ था और ऑफ स्टंप के बाहर इतनी ज़्यादा गेंदें छोड़ते चले गए। तैयब ताहिर वो स्ट्रोक खेल सकते थे, हालांकि उनके साथ कासिम अकरम वो सेंचुरी की तरफ पेशकदमी कर रहे थे, वो रन्स बनाते चले जा रहे थे, लेकिन तैयब ताहिर ने बड़ा हैरानकुन अंदाज अपनाया। अलबत्ता आमिर यामीन अब कोशिश कर रहे हैं कि पाँव दबाया जाए। अच्छा खेल दिया लेग साइड में, यहाँ पर तीसरे रन के लिए भी वापस आ सकते हैं। अली वकास ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ गेंद के पीछे नहीं पड़े। जी अच्छा प्लेस किया आमिर यामीन ने बैक फुट पे आके मिड विकेट की जानिब 3 रन हासिल किए। लीड अच्छी हो गई अब इस वक्त सेंट्रल पंजाब की, और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इनको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर कि क्या इनकी क्या थिंकिंग है, लेकिन 1.5 दिन में इन्होंने आउट करना है, और अगर वो ऊपर से थोड़े से रन्स ऊपर कर लेते तो वो इन्होंने करने भी होंगे। तो अगर इस अप्रोच से खेलेंगे तो फिर ही कुछ मैच जीतने की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज। अच्छा पुल शॉट, इस बार दूसरा रन बनाने का मौका नहीं दिया, बट पहुंच गए थे बाउंड्री लाइन से। और कुछ जो कप्तान थे उनको फिक्रों ने भी सताए रखा, असद शफीक को। ये अभी हम देख रहे हैं कि कप्तान जो हैं ये अभी भी वाइड्स में नहीं है। मोहम्मद साद जो हैं लगता है कि कुछ वक्त और गुजारना चाहते हैं, या फिर ये जो है ऑल आउट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लगता तो यही है कि ऑल आउट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा एग्रेशन की ज़रूरत है सेंट्रल पंजाब के कैंप से। ओह, यहाँ पे बॉल लगी है हसीब को। जी हाँ, ये सीधी जाकर गेंद लगी है इनके पेट में, क्योंकि ऑकवर्ड बाउंस हो गया था, नज़रें हट गई थी खुद ब खुद ही। कल भी शाम का सेशन इतना अच्छा गुजरा नहीं था विकेटों के पीछे हसीबुल्ला का, और इस वक्त भी उनको तिब्बी मदद की ज़रूरत है। खासी तकलीफ में लगते हैं, ऐसा लगता है कि गेंद जो है वो जाकर इनकी पसली में लगी। जी, या पसली पे या फिर स्टमक में शायद वहाँ पे लगी है। तो लेट्स सी, होपफुली ही विल बी फाइन। या क्योंकि बलूचिस्तान को दूसरी इनिंग्स में इनकी बैटिंग की भी ज़रूरत होगी। ये स्पेशलिस्ट बैट्समैनों में से एक हैं, अच्छा खेल कर आए हैं एबटाबाद के मैच में। गेंद जो है
यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप जो कई गेंदें हैं वो नीचे रह जाती हैं और ये बैट से भी टकराई थी। बलूचिस्तान की टीम अभी इस वक्त थोड़ा सी ट्रबल में है क्योंकि 1.5 दिन हो गया फील्डिंग करने, उसके बाद इन्होंने बैटिंग भी करनी है। बड़ी लंबी इन्होंने बारी करनी पड़ेगी, एक आध बड़ा 100 चाहिए इनकी तरफ से। और सेंट्रल पंजाब शॉर्ट इंटरवल्स में विकेट्स उन्हें मिलती रहें तो दे विल बी इन द गेम। लेकिन देखना ये होगा कि डिक्लेरेशन कब अमल में आती है, वो बहुत ज़रूरी है। इस वक्त कप्तान जो है वो वाइट्स उन्होंने नहीं पहने और उनको थोड़ा सा ये है कि एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त सिचुएशन को। थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इनकी क्या प्लानिंग हो सकती है इस वक्त। ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा वक्त तक और रखना चाहते हैं बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को मैदान में, ताकि उन्हें थकाया जाए, फिर जब बैटिंग करने के लिए आएँ तो उन्हें झकाया जाए। और इतना आसान होता नहीं है जब आप 150 के करीब ओवर्स मैदान में रहने के बाद खेलने के लिए आएंगे तो आपका जहन और जिस्म जो है वो मिलकर फिर काम करते नहीं हैं, तो कई बार टीमें जो उसमें कोलैप्स हो जाती हैं। मुझे ये लग रहा है तारिक भाई शायद ये पूरा सेशन खेलने के मूड में है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान को ये भी सोच सकते हैं ये कि अगर बॉल अभी बारी देते हैं इन्हें, सपोज उनका कोई बैट्समैन आज का दिन गुजार जाता है तो फिर अगले दिन फिर वो फ्रेश आएंगे, फिर उन्हें थोड़ा सा टाइम निकाल के वो मैच को सेव कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि इनको टाइम कम मिलेगा। ये अगर इस तरह सोच रहे हैं कि हम उन्हें थोड़ा टाइम दें आज के दिन में, उधर 2-3 विकेट्स मिलती हैं तो फिर कल आके हम इनकी इनिंग को रैप अप कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी सोच है। बट थोड़ा टाइम अगर ज़्यादा मिले तो वो मेरे ख्याल से इनको 2 नए बॉल मिल सकते हैं, तो उनके पास ज़्यादा चांस है कि 2 नए बॉल कर सकते हैं। ये पहली इनिंग्स में जो है 50 ओवर भी नहीं खेले थे बलूचिस्तान ने, लेकिन सेंट्रल को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पहले दिन उनको एक फ्रेश पिच पर बॉलिंग करने का मौका मिला था और यहाँ अब वक्त चाहिए होगा बॉलर्स को। आपको 4 सेशन से ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा अपने बॉलर्स को, ताकि फिर उन पर दबाव ना हो। और बॉलर्स जो हैं ये पर तोल रहे होंगे बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी और ये दूर चली गई दूसरी स्लिप के फील्डर से। खुशनसीबी का चौका मिल गया अली शान को और अभी तक भी इस स्लिप के आसार नहीं है। कल दोपहर से हम देख रहे हैं कि ये दरियादिली जारी है बलूचिस्तान की जानिब से। इस इलाके में बेशुमार रन्स बनाए हैं। जी बिल्कुल, थर्ड मैन का फील्डर बिल्कुल नज़र नहीं आया हमें इस पूरी इनिंग में कहीं पे भी, ना इस एंड से ना उस एंड से, और यहाँ पे बहुत से रन्स हुए हैं। हम अपने ग्राफिक डिज़ाइनर्स को बोलेंगे, चाहेंगे कि हमें कोई ऐसा डिज़ाइन पता चले हमें कि कहाँ पे रन्स हुए हैं और थर्ड मैन पे कितने रन्स हुए हैं। अगर ऐसा मुमकिन हो तो यहाँ 516 रन्स जो बने हैं और आज के दिन में जो इतने ज़्यादा रन्स बने हैं, इस बार लेग साइड में एक ही रन बन सकेगा। आज 84 रन जो बने, इनमें मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसी इलाके में बने। थर्ड मैन का ये जो इलाका है ये बहुत बारावर साबित हुआ है। कासिम अकरम ने आज खुरम शहजाद के एक ही ओवर में 2 चौके लगा दिए थे। उसके बाद भी बाउंड्रीज जो हैं आती चली गई हैं। तो इस तरह की पिच पर ये कोई मुज़ायका नहीं होता। थर्ड मैन वैसे ही थर्ड मैन पर फील्डर खड़ा करने में अब दूसरी स्लिप से भी हटाया गया। शायद जो लाइन ऑफ अटैक होगा वो स्टंप्स में रखना चाहेंगे खुरम शहजाद। हुसैन तलत चले गए मिड विकेट पे।
और इसे स्मैश कर दिया। आमिर यामीन जारहाना बैटिंग करने की शोहरत रखते हैं और इसे बड़ी खुश उसलूबी से कर दिखाया भी। छक्का लगा दिया उन्होंने, बड़ा उम्दा पुल शॉट। शानदार शॉट आमिर यामीन की, इनक्रेडिबल हिट। विकेट्स कवर करके और पूरी तरह मिडल किया इसे। मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में काउ कॉर्नर में ये शॉट खेली और स्टैंड्स में जाके गिरा बॉल। एक्सीलेंट शॉट। हुक करने के लिए गए, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी। तो यासिर अभी जो आप जिक्र कर रहे थे कि ऑफ साइड में इतने ज़्यादा चौके लगे हैं स्क्वायर और स्क्वायर के पीछे इस इनिंग्स में, ये अभी हमें जो हमारे स्टैटिस्टिशियन है ज़िया वो बता रहे थे कि ये 50%, तकरीबन 50% जो बाउंड्रीज हैं वो ऑफ साइड में स्क्वायर और स्क्वायर के पीछे से मिली हैं सेंटर पंजाब को। जी देखिए, 524 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो बनते हैं 262 रन जो हैं वो इस एरियाज में बने हैं। और उसको भी अगर चले आप 50% कर लें थर्ड मैन पे, तो 131 रन जो हैं वो थर्ड मैन पे बने हैं इस एंड पे, नहीं बल्कि बोथ एंड्स पे। लेकिन हमने थर्ड मैन का फील्डर नहीं देखा तारिक भाई एक दफ़ा भी। यासिर शाह आए हैं मीडिया एंड से, 25वां ओवर करेंगे अपनी इनिंग्स का। आई थिंक ये अच्छा आइडिया है इनको लाने का इस वक्त, क्योंकि वो इन पर अटैक करेंगे तो इसमें एक चांस है कि ये विकेट्स ले सकें। यहाँ से हमें दूर दूर बॉलिंग कर रहे हैं। आमतौर पर इतना ज़्यादा गेंद को फ्लाइट करते नहीं है। मुख्तलिफ ये तर्ज के लेग स्पिनर हैं, जो टिपिकल लेग स्पिनर्स के डिसमिसल्स होते हैं वो हम इनकी बॉलिंग में नहीं देखते हैं। जैसे कि किसी बैट्समैन को स्टंप करा देना, ये बड़ा हरबा होता है, या बहुत ज़्यादा स्लिप में कैचेस जाना, या लॉन्ग ऑफ पर बैट्समैन का कैच आउट हो जाना। ये यासिर जो है एलबीडब्ल्यू और बोल्ड करने पे इनका ज़्यादा यकीन होता है। जी बिल्कुल, ये यासिर शाह को कि ऐसी शॉट खेलते हुए सोचेंगे और कतराने में शायद इनको विकेट मिल जाए। अली शान ने 1 रन हासिल किया, जो कि बड़े मोहतात खेल रहे हैं। खेलना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले मैच में भी रन नहीं किए थे और इस दफ़ा उन पे रन्स ड्यू हैं और करने चाहिए उनको। आमिर यामीन देखना होगा कि क्या हरबा इख्तियार करते हैं यासिर शाह के अगेंस्ट। स्लॉग स्वीप करने के लिए गए, 1 रन यहाँ पर हासिल कर लिया गया। तो 342 रन की बर्तरी है। आमिर यामीन अपने 50 की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। अली शान यहाँ हैरान कुन तौर पर ये भी बहुत ही सुस्त बैटिंग कर रहे हैं। अली शान जो हैं ये आमतौर पर अगर 43 गेंदें खेल जाएं तो ये आम हालात में इनके 40 रन तो ज़रूर होते हैं। 527 पर 6। ऐसा कोई रूल हो सकता है तारिक भाई कि 150 ओवर्स से ज़्यादा इनिंग्स नहीं खेल सकती एक टीम?
ये तो इसका इन्हिसार तो प्लेइंग कंडीशंस पर होता है, और मैं समझता हूँ कि ये सोच जो है सेंट्रल पंजाब को कुछ बदलने की ज़रूरत है। इनको पिछले 8 टूर्नामेंट जो हमने देखा था उसमें भी ये टीम जो है हद से ज़्यादा मोहतात थी। आपको 2 बार आउट करना पड़ता है मैच जीतने के लिए, और अब आपके पास हथियार भी हैं। पहले इन्होंने हुनैन शाह को नहीं खिलाया, वो भी एक हैरानकुन फैसला था। पिछले मैच में ये बलूचिस्तान की तरह ये भी मीडियम पेसर्स से खेलने चले गए थे, और फिर आखिरी दिन इनका हौसला नहीं हुआ कि इनिंग्स को डिक्लेयर कर दें, और आज एक बार फिर अपनी इनिंग्स को ये हद से ज़्यादा तूल दिए जा रहे हैं। तारिक भाई 215 के करीब मैं भी फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हूँ, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है तो आप ऑलवेज़ जल्दी आप खेलते हैं और डिक्लेयर करते हैं ताकि आपके पास टाइम मिले। आपने एक ही दफ़ा आउट करना है ना उन्हें, लेकिन सपोज़ अगर वो खेल जाते हैं, आपकी लीड को वो क्रॉस कर जाते हैं, 50-60 रन ऊपर कर जाते हैं, तो आपके पास टाइम तो हो वो करने के लिए, वरना वो आपको ड्रॉ के लिए खेल जाएंगे इजीली। अच्छा शॉट 4 रन गैप में खेले आमिर यामीन, फॉलो किया उनको, लेकिन इसको बहुत ही अच्छा खेले इस शॉट को। जी हाँ, रूम के लिए क्रैम्प करना चाहते थे, लेकिन वहाँ से शॉर्ट आर्म जैब जो कहा जाता है पूरी तरह कंट्रोल में नज़र आए। छोटे कद के हैं, इसलिए भी बाउंसर को कोप करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। खासे फ्लेक्सिबल हैं आमिर यामीन, टैलेंटेड बैट्समैन है ये। गेम को स्विंग करते हैं, बल्ले को भी स्विंग करते हैं, ऑफ साइड में खेलने में कामयाब हुए। ये जिद्दत है, रैंप शॉट खेला और अपने 50 रन मुकम्मल किए, और ये बुलावा आ गया ड्रेसिंग रूम से आमिर यामीन और अली शान को। इस तरह सेंट्रल पंजाब ने बिल आखिर अपनी पहली इनिंग्स ख़त्म कर दी है 535 रन 6 विकेट पर और 350 की बढ़तरी के साथ। वेल प्लेड आमिर यामीन एंड वेरी गुड डिक्लेरेशन, और एट द एंड शुक्र है कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है और अच्छी डिक्लेरेशन। आमिर यामीन के 50 पे इन्होंने अभी भी ऑन टाइम की है इन्होंने। अगर ये सेशन खेल जाते तो फिर थोड़ा देर हो जानी थी। यहाँ तो सेंट्रल पंजाब के जो सपोर्टर्स हैं वो इस फैसले पर यही कहेंगे कि उम्मीद करेंगे कि देर आयद दुरुस्त आयद। तो अब इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए बलूचिस्तान को 350 रन्स बनाना होंगे। अच्छी बैटिंग की सेंट्रल के मिडिल ऑर्डर ने। आमिर यामीन ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, कासिम अकरम ने 92 रन्स बनाए, अपने करियर का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, और सीनियर बैट्समैन अजहर अली ने भी अपना किरदार कल बखूबी निभाया था। उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सेंचुरी बना गए। तैयब ताहिर 138 रन उन्होंने बनाए, वो हाईएस्ट स्कोरर थे। आज एलबीडब्ल्यू आउट हुए हुसैन तलत के हाथों इन स्विंग पर, और अजहर कल आउट हुए थे चाय के वक्फे से पहले। उन्होंने 107 रन बनाए। मोहम्मद साद ने 38, अब्दुल्ला शफीक ने 30 और आबिद अली ने भी 30 रन बनाए, और बेहतरीन बैटिंग कही जा सकती है सेंट्रल पंजाब की जानिब से। ये पिच रास आई, सिंध के खिलाफ उन्होंने 400 रन बनाए थे और इस इनिंग्स में 500 का हिस्सा अबूर किया। जी, खुरम शहजाद ने 33 ओवर्स किए, 33.3 ओवर्स 121 रन दे के 1 विकेट हासिल किया। आकिब जावेद ने 33 ओवर्स में 116 रन दे के दो खिलाड़ियों को आउट किया। अमाद भट्ट ने 27 ओवर में 87 रन दिए, 1 आउट किया, और हुसैन तलत ने 2 आउट किए 22 ओवरों में 75 रन दे के। यासिर शाह 25 ओवर में 106 रन दिए जिन्होंने, और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया, और असद शफीक ने 3 ओवरों में 10 रन दिए और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। बलूचिस्तान की बॉलिंग में ज़्यादा दम नज़र नहीं आया, लेकिन आमिर यामीन का अंदाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। आड़े हाथों लिया उन्होंने बलूचिस्तान के बॉलर्स को, और खासी पिटाई करते रहे। अच्छा रैंप शॉट उन्होंने खेला, और इसके साथ उनके 50 रन और ये इनिंग्स
ख़त्म हुई। पहले बैटिंग की दावत दी सेंटर पंजाब ने बलूचिस्तान को, जिनने 185 रन बनाए। हुसैन तलत 43 रन के साथ टॉप स्कोरर थे। अहमद दानियार और मोहम्मद अली ने बड़ा जारहाना स्पेल किया और जवाब में सेंटर पंजाब की टीम अब 350 रन आगे निकल गई है और अभी हम कह सकते हैं तकरीबन 5 सेशंस का खेल इस मैच में बराबर है। तो यहाँ एक वक्फा आने को है, जिसके दूसरी तरफ देखिएगा बलूचिस्तान की बैटिंग।
Hello and a very warm welcome back to Rawalpindi Cricket Stadium. Quaid-e-Azam Trophy 22-23. This is coming to you between Balochistan and Central Punjab. Story of domination from Central Punjab, replying to Balochistan's innings. 535 for 6 declared. What a solid looking batting card this is. Dominated by Tayyib Tahir and Azhar Ali. It's been hard work for Balochistan bowlers. 1 wicket for Khurram Shahzad, 2 for Akif, 1 for Ahmad Butt, and in the end 2 for Hussain Talat. And look at that economy, higher side. This is the current situation of the match. 185 plays, 535, and Central Punjab leading by a mammoth 350 runs. 59 overs remaining in the day's play, and then of course we have tomorrow the whole day. Central Punjab in the driver's seat, thanks largely to this man Azhar Ali, along with plenty of other solid contributions. But these men will have a challenge on their hands. Imran Butt, experienced first-class cricketer, average of 35, 1200s, more than 5,000 runs as well, at best of 214. Imam ul Haq, his partner, needs no introduction. 3,805 runs, 1950s, 900s, best of 202, and very impressive average of 40.82. It's going to be a test, as you said. It's going to be a challenge, because we know that what this new ball can do and what this bowler can do. Amir Yamin, he would look to swing the ball early on. 61 matches, 163 wickets, best of 9 for 101. Good all-round form, just coming fresh on the back of that unbeaten 50. Along with Qasim Akram, probably he was the only Central Punjab batter who played with intent. Plays the call, 2 slips and 2 gullies. Here we go. Yep. That big in-swinger that you expect from Amir Yamin. He does bring the ball back into the right-hander. Leg buys this call. It's an interesting situation for Balochistan batters. They trail by 349. What approach would they be applying now? Would they go out, just normal batting, just play out these remaining 1.5 day? It's not going to be easy. Or they go after hard and look for runs? Well, 59 overs today and then another 90 tomorrow. So that makes almost 149 overs. We may lose some due to bad luck like we have done every day. So around 140 overs of batting they need to do. 3 slips and a gully now. Well, it will have to come from this man, Imam ul Haq. Such a formidable opener. He got to be careful with that swinging delivery. In the first inning we saw that in-swinger to him troubled him, got his wicket. That is where he should be careful. It would be interesting to see who shares the ball with Amir Yamin. Well, if I was the captain, I would give it to Muhammad Ali, for sure. Because he's the one who has looked threatening with the new ball. He's covering the angle beautifully, Imam ul Haq. Yeah, like Ali said, Imam's problems has been with the ball that comes into the left-hander. We've seen him fall over many times, not just in this match, but in his career as well. And something like a lot of the left-handers get this problem early doors. They just fall over too far across. Well, I think you're going to get your wish, Ali, because Muhammad Ali looks like he's loosening up. That'd be a challenge for Imam, because he does take the ball away from the right-hander into the left-hander. Amir Yamin, his stock delivery is the away swinger. Yeah, he's one of those bowlers who are steady, not much pace, but the swing and the consistency definitely there for Amir Yamin. He will come also handy. Ahmed Daniel, it's a good debut. 3 wickets for him in the first inning. He would want to repeat that performance. And at a point he was on a hat-trick. And a catch drop, a heartbreak. Yeah, in the end he took 3 wickets in 4 balls. But Central Punjab has got more versatility in their bowling lineup.
It's a four-pronged pace attack, but all the four pacers are different from one another. Amir Yamin, skiddy, swinger, medium pace. Muhammad Ali is the quickest of them. And he does bang the ball in. Umaid Asif is back of a length, natural back of a length bowler, tall bowler. In this innings, he will bring the bounce in the pitch into play. And Ahmad Danial is quick and skiddy. So yeah, all four quite different from one another. Means that the challenge will be greater for the Balochistan batters. Imam looks in good order so far. 1 for none. Yeah, Mohammad Saad also can bowl a few overs in between just to give the rest to the main bowlers. He's used. He can swing the ball, late swing. Yeah, I'll give him the ball once I've had all my four main bowlers have had a ball, and if needed, then he can be thrown the ball. Yeah, as expected, as I wished. It's Muhammad Ali to share the new ball. He's had a good career, 68 wickets, best of 9 for 94. This will be interesting. A new challenge for Imran Bhatt. Good average of 23 as well. 3 slips in a gully. It's a good move by Mohammad Saad, the Central Punjab captain, giving the new ball to Muhammad Ali because he's the one who's looked threatening, the one always looking to take wickets, positive, good pace. He's got 3 slips also in place for that. He has bowled beautifully since this season has started. The last game, he was magnificent. In this game also. Can they finish it today? Can they bowl them out in these remaining 2 sessions? It's a good possibility. They have to keep their hands dry in the slips. They let too many go in the first innings, the Central Punjab slippers, especially Saad. Because I'm pretty sure they will be in play sooner rather than later. Yeah, there are people around us who wanted to finish today. They want an extra day off. Let's see. Trailing by 349. The first battle would be for Balochistan just to play out the day. He's the cheerleader behind the stumps. You might have heard him. Very loud screams, just like a street vendor. He's been very active, very proactive, Ali Shan, as a wicketkeeper. And did you notice that this drill they do whenever they're bored or wicket is not coming, they try a few things in the field, they just clap and dance a bit. We've seen that. There you go. That's what I was talking about. He looks like a vendor is in street trying to sell some vegetables or fruits. Very loud and distinguished style of cheering his team up. Yeah, you're right. And I'm pretty sure he's behind that as well. That the chorus that they do at times when they get bored. Nice solid punch from Imran Bhatt to get him off the mark. Back up. Yeah, you got to be positive. That's what you will have to do, these Balochistan openers. And by positivity, I don't mean runs. Footwork, approach, singles, rotation of the strike, everything. This one was nicely played right. That's a good footwork. Onto the front foot, placed it nicely. Timing not quite there, but it will work. Yeah, impressive stride as well. It shows the intent. Looking to get right on top. But then he has to guard against pushing hard at it. That was a good delivery, but this is what I meant with the Central Punjab bowlers being able to use the conditions really well. Have a look. That length again, teasing, driving. He wanted him to drive, but that's a good
leave, I would say, in the end by Imran, but just don't hang your bat onto it. You saw that bat, he pushed at it too far away from his body. But that length makes you do that. You can see it's a batsman's error, but he was induced by this good length and a line probably closer to the fourth off stump. Excellent. Good work, Quaid-e-Azam. Good start, Central Punjab. 3 for none. For Central Punjab's liking, these batters are struck at wrong ends because ideally they would want Imam to face Muhammad Ali because he takes the ball away from the right-handers, and Imam has had problem with those kind of deliveries. Yeah, one thing these Balochistan batters might have learned from Central Punjab batters is to just don't give it away. Stay on the pitch, stay there. Just make sure that this new ball gets old, and then there are plenty of runs available. He has to make the call. Did it pitch outside? I think it did. Imran Javed making the call will be an interesting replay. But with Amir Yamin's angle, it's more likely that it would have pitched outside the leg. And just on leg side. Very close. I think it pitched outside. Because it was shorter in length. For him to get the leg before, it needs to be a little fuller than that. Good decision, Imran Javed. That's the plan. The last over and the first delivery of this was leaving Imam ul Haq. This one straightened up a little. That's what confused Imam. It was very close, very close. Good delivery nonetheless. We've discussed these problems of Imam falling over early in his innings. That's what Amir is discussing with umpire Imran. That was real time. Yeah, marginal outside the leg stump, I would say, but marginal. You remember, more than half of the ball has to pitch within the stumps for the umpire to declare it pitching on. And I think it was a good decision. Imam looking for a quick run, looking to rotate the strike. Not there. Central Punjab on the ball. Yeah, Ali, I have to say that Imam is the key here because he loves to bat long and he doesn't give it away normally. See, the stage is set. The situation is ideal. There's no pressure whatsoever. Just stay there. Enjoy your batting. Bat out the day. Bat tomorrow all day. Bat as long as you want to. Easy game to talk. Yeah, but the twin hundreds here against Australia. He went for that big drive. Amir wouldn't mind that. Yeah, but twin hundreds on the same venue against a quality opposition. That must be at the back of Imam's mind. He had a fabulous test match back in March. Are you sure that was a similar sort of pitch? What do you think? That was a beautiful pitch. So is this one. I meant beautiful batting pitch. This is more challenging, the pitch, no doubt about that. Once again, that fuller length, not from the middle of the bat, but Imam will collect a couple. 3 overs gone, 5 for none.
Plenty of batters in this list. Azim Ghamma, Nasir Shafiq, Ali Waqas, Hussain Talat, Hasibullah, Ahmad Bhatt. Yasir Shah has 100 in Australia. You have to remind every time. Slight knock there, but no run. As they always say, never run on a misfield. You see, Muhammad Ali is rushing Imran Butt. Little bit of extra bounce, and that probably is hitting the seam now. Remember this Kookaburra ball, the seam doesn't last very long, but with this new ball, if you hit the seam, I think there are some cracks that will start to open up, although they are not very wide and not very loose. But still, a little bit of something for the bowlers. Look at that. This is excellent leave from Imran Butt. This is classic first-class cricket. Now, there is definitely something for the bowlers on this pitch, especially for those who can pitch the ball in the right areas. And Muhammad Ali is exactly one of those. This one was rightly pitched and excellent leave too, leaving on the length. It's good. But look at how Imran Butt moved his left foot just slightly across to cover that off stump. Looking very determined. Once again, good leave. Was shaping to play, but was watching it all the way. This is a good contest. Ahmed Daniel looks like he's warming up as well. Wouldn't be a bad idea if skipper Saad rotate the 4 quicks in short bursts. There's a mid-wicket in place now. Cover has been left open. Okay, so ball hitting the bat. Looked like an effort delivery. But Imran is doing well. He's looking to play it quite late. He's experienced enough. He's been around at this circuit for a bit. He would know how to bat in these conditions. 6 test matches for Pakistan, best of 91. What happened to him? He didn't score runs. He scored enough to be in the side, but could not quite sustain his position there. I'm not sure he scored enough runs, but he caught beautifully. He made a name for himself with his slip catching. Here you go, once again, that little forward press, soft hands, allowing the ball to come and hit the bat. This is good cricket. Loving it. It's just amazing to see how quickly things can turn around. When Central Punjab was batting, it seems like a pretty normal, easy pitch to bat on. And suddenly, when Balochistan is batting, it seems like a different pitch. The ball is moving and doing a bit, oohs and ahs. See how many balls Muhammad Ali has made Imran played. And most of them on the front foot. That is the consistency that was lacking in Balochistan bowling. They spread it too much. There you go. Once again, that challenging length. Imran is up to it so far. But this is good from Muhammad Ali as well. Intriguing battle. 5 for none. What's the plan in this camp? Balochistan, Rajhans looks worried. Yasir Shah didn't have a good game. Gave away so many runs without a wicket. What would they be thinking? The approach? Or would there be any message to the batters? Or just play out there, enjoy your batting? These two are test players. They know their role. The challenge is to see the new ball off without losing a wicket. We know what's to come. Asad Shafiq in that middle order is a key man as well. Like we were discussing a while ago, 140 overs probably available
in the remaining of the game. And Balochistan's task is simple. They have to bat most of them. Once they do that, they have a chance of survival. But it is a long, long way away. Good leave. Good leave. At times Imam has had trouble with planting that front foot across. But on that occasion he judged the movement and the line of the ball very nicely. You see that little forward press, and then the right foot comes right across just to cover the angle. Pretty much all left-handers have this problem earlier in their innings against the right arm over the wicket bowlers. Angle will always take the ball away, but the one that comes back, it could be the danger ball. Easily negotiated. Balochistan trail by 345 runs. That means that Central Punjab can attack throughout this 1.5 day. No problems. They can keep the slips in there. They can keep the catches, the fielder at catching position for most of the overs. They can smile also. Yes, Abid Ali and Ali Shan. Ali Shan seems to be a character. Mohammad Saad in the third slip. He saw plenty of action in the first innings. He took a couple of catches and dropped a couple. That's the length. Imam not in control. Will look for two. Yeah, easily done. Good positive running by Imam ul Haq. He was disappointed, but there was always two. The way he was running, the way he ran his first run. Let's have a look. It's not quite timed it, but look at that running. From the moment he hit the bat, he knew that there is two available. And he did it quite easily in the end. That's a good learning for any youngster. Yeah, that's good intensity. Muhammad Ali's got a very strong arm. But like you said, Imam had no hesitations. Once you make an early decision, it makes things a lot easier. The going gets tough, the tougher gets tougher. Beautiful. This is glorious from Imam ul Haq. Just leant into it. Pure timing and class from the left-hander. And that's Imam ul Haq's special. We've seen him play this shot so many times. Oh, look at that. Pitched up. Nice footwork. Front of the bat. No problems. And placement is beautiful too. Good effort also by Ahmad Danial. But the timing was amazing. See that plant of the front foot, that length troubled him. The line was slightly wayward from Amir Yamin. Not a bad attempt though. 5 gone, 11 for none. Even at his pace. Playing it late once again, Imran Butt. Last ball of last over. Keep an eye on Imam's footwork. Slightly open to begin with, that little forward press, and then plant across. That line wasn't good. If it was straight, it would have troubled him because he was not in a position to tackle that length. He's getting ready for that fuller, wider length. Good ploy by Amir Yamin. Just faltered a little bit on the execution.
Imran Butt has been up to the task so far. He's looked the more assured and accomplished of the two openers so far. Imam has had a couple of inside edges. There's always a dilemma for the openers. When they come in, they're looking to cover that off stump. They're worried about the away swinger. Not a bad idea to slip in a good sharp bouncer right on the money. He went for the change-up ball, lost it completely. Yeah, the openers, they have to deal with lots of things while playing the new ball. Swing being the best one, this one wavered. And the setup from the bowlers. That's unconventional, but it works by Ali Shan. We've noticed in this match, there's plenty of balls that wobble after it passes the stumps. Ali Shan was covering the angle of the ball and it just swung back at him, made him look very, very awkward. Yeah, talking about the wicket keepers, there's been a shortage of wicket keepers in central Punjab. We saw that in white ball cricket. When Akhlaq was wicket keeping, he's a makeshift wicket keeper. Junaid also, he's a batter who can wicket keep. Yeah, that's what we were talking about. This activity they do, it's not the first time. They keep themselves active. It's a good team effort, good exercise. Nice steps from Abid Ali. He joined in. The chorus was all pretty well synced. That's what I say. Ali Shan is a character. Very indecisive on that occasion. Imran Butt, not sure for the first time. His decision making wasn't spot on. Very lucky on that occasion. Now that seamed in after pitching. Yeah, look at that. That's not what he was expecting. Because he's dealing with outswingers. And this one suddenly just came in. Lucky that it was the line was not right. Looks committed for a big one, Imran Butt. On that front foot. This has been a very, very testing spell by the two opening bowlers from Central Punjab. Another maiden, 11 for none. Bangalzai, your extreme left, Bhatti in the middle, Tasawwur on your extreme right. Dropped a catch of Qasim Akram for the short time that he was in the field. Not a happy moment. That's the thing, when you drop a catch, you get reminded all the time for the entire duration of that match. Especially when the batter has scored runs. Amir Amin, short and stocky, well built. He's a workhorse. Very effective with the new ball, but change of angle now. And Imamul Haq really had trouble with the side screen in the first innings as well. 3 slips in a gully. Different angle now from Amir Amin to challenge Imamul Haq. Beautifully timed, this time straight to the fielder. See, that angle will give Imam that freedom on that onside, because that angle works in his favor, because his head will line up the ball better as opposed to the other angle from over the wicket. Yeah, that's what I was talking about, that activity they do. Every time they're bored, it just wakens them up. The whole of the team keeps them active.
keeps the team united. Let's talk about the wicket-keeping options Central Punjab had earlier. Ali Shan is playing in the red ball cricket. They had troubles in white ball. They used Junaid first, then it was Akhlaq. They haven't really found anyone as good as Kamran Akmal was for Central Punjab. He was quality wicket-keeper batter, but somebody who can do both, it's been hard to get, hard to find. Ali Shan hasn't been consistent. We remember that remarkable innings that he played last year in the Quaid-e-Azam trophy. Scored 100 and almost single-handedly won his side the game. But no ball from Amir Amin. But you did mention about Kamran Akmal. Definitely, he's been one of the greats. He served in international and domestic cricket for quite a long time. Be very difficult to fill his shoes. But consistency is what's lacking with Ali Shan, and in the first innings we saw his wicket keeping wasn't as tidy as you come to expect from a top wicket keeper. So yeah, plenty of hard work ahead. He's getting the opportunities. He's got to make use of that, because if he doesn't, he'll allow someone else to come in. You mentioned Junaid. He was a very tidy gloveman, although his batting wasn't as good as Ali Shan, or didn't perform as much as that. And also, there's always a new crop of players coming. The under-19s, they graduate every year. So you can't take your place for granted. When you get the stage, you got to perform. This is relentless and ruthless, this new structure. It's a wasted effort. For the first time, Amir Amin is bowling to Imran, but probably after the first over, I think, because both the batters had stayed on the same end. Yeah, they survived for 11 overs in the first inning, Balochistan openers. So still time to go. The ball is relatively new, just into the 7th over. And they look better. They've learned from Central Punjab batters. It's not happy. That gap between the two side screens maybe is the issue here. This is an important passage. This is an important partnership. Important inning for Imran and Imam, because they trail by 337. Huge. Tight and compact. That's what you have to do for long periods on this pitch. Look at how beautifully they've shared the strike. 21 balls for Imam and 21 for Imran, but Imam has outscored Imran, but dare I say that Imran has looked in more control. Yeah, the footwork has been really positive and is looking to play the ball late. That's what we have seen so far. In the first inning, got stuck in the crease. There was not much footwork. So yes, they might have learned from central batters, from somebody like Azhar Ali, scored 100, Tayyib Tahir, even Qasim Akram. You can always learn from the youngsters. 7 overs gone, 13 without loss, Balochistan. मोहम्मद अली अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे पवेलियन एंड से और उनका सामना करेंगे स्टेयर टेस्ट बैट्समैन इमामुल हक।
पहला ही शॉर्ट बॉल जाने दिया जिसे इमामुल हक ने। 1 बाउंस अंपायर की कॉल मोहम्मद अली के लिए, जिन्होंने शानदार स्पेल और शानदार बॉलिंग कराई थी पहले मैच में, और इनकी बॉलिंग की वजह से इनकी टीम में जान पैदा हो गई थी। नहायत ही शानदार स्पेल करवा चुके हैं मोहम्मद अली। लेट इन स्विंग हुआ, अच्छा सीधे बल्ले के साथ खेले इमाम इस बॉल को। 2 मंझे हुए स्टार बलूचिस्तान के इस वक्त क्रीज पर मौजूद इमरान बट और उनका साथ देते हुए इमामुल हक हाल ही में काउंटी खेल के आए हैं समरसेट की जानिब से। तीन स्लिप्स, एक गली, पॉइंट, मिड ऑन, मिड ऑफ और मिड विकेट से बॉलिंग करा रहे हैं मोहम्मद अली। अच्छी गेंद थी, अगले कदमों पर खेले, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा रिस्पांस दिया इमरान बट ने इमामुल हक की। थोड़ा सा बॉल फंबल हुआ फील्डर से, उमैद आसिफ थे, क्विक रिस्पांस। मिड ऑफ के फील्डर तेजी से गेंद के ऊपर आए, मिड विकेट पर एक बार फिर लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बलूचिस्तान का, बॉलर्स और फील्डर्स को थोड़ा सा तंग करते हुए। ये एक ऐसी गेंद रही है जो इमरान की बदखास समझी जाती है। इन स्विंग पर इनको परेशानी होती है बाउंसर के अलावा, और पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेलते हुए भी इनको इसी पर मुश्किल रही थी। मोहम्मद अली से नई गेंद कराने का फैसला ये अच्छा है।